Hello students, welcome to the class today. So we are carrying on with this chapter 1, nationalism in Europe, and we are about to finish the chapter. We are towards the last topic. What we have done in the last two videos, I think those were the topics that were really needed to be covered. So we have completed these two topics, the unification of Germany and unification of Italy. With the completion of these two topics, now we are, as you know, we have headed towards the last topic where we are talking about the unification. Actually, it's not unification. The topic also is talking about that unification is something different. This point than this topic that we are going to discuss, it is not unification. This topic, because fourth topic where we have discussed about Germany's unification and Italy's unification, the people who have played important role in this, Bismarck, Otto von Bismarck, and in Italy it was Cavour, Chief Minister Cavour was there. All these cases, all these things that we have done. The third one is, as the topic itself gives you an idea, the strange case of one of the most happening countries of Europe. Europe क्या world कह सकते हैं. It was a strange case. Why do we call it strange? ऐसा क्या था? I'm sorry. ऐसा क्या था? Sorry children. ऐसा क्या था कि हम इसको strange कहते हैं? Why do we call it strange? Because the way nation states were coming up, the way nation states were building up. ठीक है, many nation states were there, a new way of ruling, new way of conquering, new way of managing the things, understanding the things, administration in a new manner. सारी चीजें हो रही थी, लेकिन in Britain, administration was not new. Administration was quite old. And the nation states that we are talking about, some scholars said that is Great Britain. Are we talking about Great Britain? Because in Britain also, there was, in Britain also, there was formation of nation state. Nation states का concept आपको पता है. Unification is there, a sense of belongingness is there, togetherness is there. लोग अपने आप को country के लिए समर्पित समझते हैं. They are ready to lay down their lives for the sake of the country. And unity, integrity, fraternity, all these are the parts of the nation state. Lekin, whatever has happened in Britain, it was not sudden. अचानक से नहीं हुआ. Like अभी in Germany and Italy also अचानक से नहीं हुआ. It was in a very planned manner. It was in a very planned phase. लेकिन Britain में क्या था? Whatever has happened, it had a background. पहले कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके थे जिसके वजह से ब्रिटेन की हिस्ट्री एक अलग तरीके से डेवलप हो रही थी. द ब्रिटिश nation state formation was coming up in a new manner. Okay, it was result of long drawn out process. ये चीज ध्यान रखना. It was a result of काफी दिन से चला आ रहा था एंड काफी दिनों का स्ट्रगल था. Long drawn out
process. Gradually and slowly, it was being carried forward. And British nation 18th century तक, till 18th century तक हम अगर ये कहें कि there was one British nation or there was British country, तो we would be wrong. ऐसा नहीं था. Till, please understand, because long drawn out process is there, primary identities, there was no proper British nation. ठीक है, no proper British nation till 18th century. 18th century तक अगर हम कहें, तब तक क्या था, ब्रिटेन was divided into many parts till 18th century. Some points are there that you need to understand. Okay. And primary identities of the people, आखिर लोग किस तरीके से जाने जाते थे? Like I am staying in India, so I am an Indian. But the people who are there in Britain, are they the British? And there was no British nation. ऐसा कहने के लिए British नहीं था. तो what was the identity of the people? They were the ethnic people, जो काफी सालों से वहां रह रहे थे. The people who had inhabited this place from a very long time. Okay, like जैसे English, they were called as. It was inhabited by ethnic groups. Ethnic, ठीक है, एथनिक आपको पता है, जिनका अपना कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, कस्टम्स होता है. दे आर द एथनिक पीपल, वेरी आइडेंटिकल. दूर से समझ में आ जाएगा वो घाघरा चोली पहना हुआ है, वो गुजरात वाले बंदे हैं. एथनिक, a traditional thing that they follow. Got it? So it was inhabited by, please understand this terminology, ethnic groups. कौन कौन थे? Which were these ethnic groups? British, the English, the Welsh, the Scot or Irish. They were the English, the Welsh, Wallonia region was there. These people were called as the Welsh or the Scot or Irish. जो आयरलैंड में रहते हैं, people who stay in Ireland, okay, all these ethnic groups which were there, ये जितने भी groups हमने यहाँ पे बात किए, different groups were there with their own cultural and political traditions. It was very identical. They have maintained their identity in a very separate manner. This identity was identical in a very cultural and in a very political manner. So cultural and political traditions were separate. Cultural and political traditions were separate. Got it? कल्चर अपना अलग रखा था, पॉलिटिकल सिस्टम अलग था, लेकिन इंग्लिश नेशन वॉज ग्रोइंग इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, क्योंकि यू नो दे वेयर ऑक्यूपाइंग कॉलोनीज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हर जगह जा जाके ये अपनी कॉलोनी बना रहे थे, अपने आप को आइडेंटिकल बता रहे थे, अपनी आइडेंटिटी अलग रख रहे थे. इतनी अलग रखी दैट टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद यू इन इंग्लिश. So identical they were. अरे उनको हम हिंदी सिखा देते, they would have learned हिंदी, अपने कंट्री में जाके हिंदी बोलते. We could not do that. But the smart people who embedded their culture in our culture, हमारे यहाँ पे अपनी सारी customs and traditions वो छोड़ के गए. So we still know them. We still बहुत ज्यादा honor है, respect है. All these things they have maintained in a very ethnic manner. Okay.
यू नो ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज विच आर देयर ना, खाली हम ब्रिटिश की बात नहीं करेंगे, चाहे फ्रांस हो, पोर्टुगीज हो, जर्मन हो, दे ऑलवेज हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। हमेशा अपने आप को अलग से किसी हर एक लोग से सुपीरियर समझते हैं। एंड इंग्लिश नेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश नेशन वॉज ग्रोइंग डे बाय डे। गॉट इट? मतलब अपना पावर, बिकॉज इकोनॉमिकली दे वर वेरी पावरफुल पीपल, सो इकोनॉमिकली दे वर इंक्रीजिंग देयर पावर एंड दे वर मेकिंग देयर पावर नोन टू द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हर एक लोगों को इनका पावर समझ में आ रहा था। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश नेशन वॉज ग्रोइंग। हाँ, नाउ व्हाट वॉज हैपनिंग कि when their power was increasing, their wealth was increasing, importance, क्योंकि यहाँ पे देखो इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश सब लोग थे इसमें, जिनका पावर बढ़ रहा था, दे वेयर दीज पीपल, ब्रिटिशर्स। एंड इंग्लिश पार्लियामेंट, they had seized power from the monarchy in 1688। 1688 में किंग को हटा दिया था इन लोगों ने। They have taken the power in their hands in the year 1688 at the end of a protracted conflict। काफी ज्यादा दिन तक ये conflict था। And please remember the date, in 1688 monarchy was removed। हटा दिया इन्होंने। Got it? Monarchy was removed from Britain। राजा को हटा के the common people have already, and there was a concept of nation state, because बाकी के जगह पे the nation states were coming up, so the people here also thought that they also need to give birth, they also need to start working for nation state। and monarchy खत्म होने के बाद Britishers, the English, they decided that now the power would be in their hands, अपने हाथ में सारा पावर लेके, and they were moving forward, आगे चलने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। lot of conflict was there, लेकिन English Parliament took the control in their hands and they made a nation state, and England was at its center। ठीक है, monarchy was removed from Britain and Parliament, ठीक है, took the power in its hand। in its hand। पार्लियामेंट वॉज देयर, इलेक्शंस वेयर देयर, लोगों ने जो देखो पार्लियामेंट का जो सिस्टम रहता है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मोनार्की से जिन लोगों ने पावर लिया था, एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, काफी दिन तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। आफ्टर दैट दे केम टू बी नोन एज अ नेशन स्टेट एंड इंग्लैंड वाज एट इट्स सेंटर। इंग्लैंड को उन्होंने बीच में रखा, बाकी सारे लोगों को साइड में कर दिया। all the other country, all the other groups which were there, the Welsh, the Scot and the Irish, इन सबको साइडलाइन करके ब्रिटेन was, English was at the center। Please understand। So England was center of power। all the power was in its hand। now what did they do? They were very smart people, as you know, forever, हमेशा के लिए the Britishers have been smart people। okay, so Act of Union was signed in 1707। the Act of Union signed in 1707। अब ये क्या था? पहले तो देखो क्या होता है, अब किसी और को अपना पावर दिखाने के लिए, यू वांट टू शो योर पावर टू समबडी एल्स, तो उसके लिए पहले खुद तो पावरफुल बनना पड़ेगा ना। So they have taken the power in their hands, they were completely controlling the power in their hands
एंड देन नाउ दे थॉट कि ये बाकी की जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, द स्मॉल कल्चरल यूनिट्स दैट आर देयर, इनको भी अपना पावर दिखाते हैं, बट मारपीट से नहीं किया. दे वर वेरी श्रूड एंड वेरी स्मार्ट पीपल. ठीक है, बहुत चालाकी के साथ व्हाट डिड दे डू, दे signed the treaty where they have made the United Kingdom of Great Britain. किसके साथ साइन किया? इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ साइन किया. ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन साइंड इन 1707 with Scottish people were there, na? Remember the Scottish with Scotland and Great Britain was formed. Got it? Great Britain was formed. Great Britain, Act of Union. They got united. ठीक है, एक साथ यूनाइट होके एक्ट ऑफ यूनियन इन्होंने साइन कर लिया. एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके बाद इंग्लैंड वॉज एबल टू, अब क्या हुआ कि स्कॉटलैंड के साथ अच्छे से बहुत प्रेम से इन्होंने इसको साइन तो कर लिया. बट नाउ व्हाट दे वर डूइंग, दे वेर डोमिनेटिंग देयर ओन टर्म्स. उन्होंने कहा, हमेशा ब्रिटिशर्स ऑलवेज हैव गॉट दिस फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, अपने आके किसी को कुछ समझते नहीं है. तो नाउ दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग देयर ओन टर्म्स ऑन स्कॉटलैंड. ओके, ब्रिटेन भाई यूनियन साइन किया है तो आपकी कुछ बात हम मानेंगे तो हमारी कुछ बात आप भी तो मानेंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्रीटी वॉज साइंड. कोई गुलामी थोड़ी है. इट इज नॉट लाइक स्लेवरी ना, दैट ट्रीटी हैज बीन साइंड, अभी हम जो कह रहे हैं वही करो. इट वॉज नॉट लाइक दैट, बट द ब्रिटिशर्स हैव डन दैट. पहले स्मार्टली दे गॉट द एक्ट ऑफ यूनियन साइंड एंड आफ्टर दैट Britain started dictating Scotland. बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप नहीं था, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वर्किंग एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन, who were the sufferers? सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हो रही थी? The Catholic people. The sufferers were the Catholics. ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स थे. All the groups were not dominated, but some groups were badly dominated, and the Catholic clans which were staying in the Scottish Highlands, they suffered terrible repression. जब भी वो कहते थे ब्रिटिशर्स को, they were sick and tired of the British domination. So they really wanted to be free. अलग होना चाहते थे ब्रिटेन से. एंड इसके लिए they were struggling. क्या होता था? The Scottish Highlands were facing repression. ठीक है, बहुत दबाया जा रहा था, सताया जा रहा था. दे वर सेड डोंट फॉलो कैथोलिसिज्म. स्कॉटिश हाईलैंड्स, उनको कहा, स्कॉटलैंड में जो लोग रहते थे, दे वर स्पीकिंग गैलिक लैंग्वेज. ठीक है, स्कॉटिश पीपल वेर फॉरबिडन टू स्पीक, मतलब उनको कहा गया कि डोंट स्पीक योर लैंग्वेज. एंड व्हाट वाज देयर लैंग्वेज? गैलिक लैंग्वेज. वेयर फॉरबिडन, फॉरबिडन मीन्स उनको मना कर दिया गया. Forbidden to speak Gaelic language. Got it? उनको कहा गया कि and you cannot speak Gaelic language, you cannot wear the national dress. Large number of people, they were forcibly driven out of their homeland. Here ये क्यों हो रहा था, इसको भी समझो. Why were the Britishers doing it? Please try to understand. Scotland is a very beautiful place. इतनी खूबसूरत जगह है.
तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू कैप्चर दैट. ब्रिटिशर्स उनके हाथ से वो सारा कुछ ले लेना चाहते थे. They wanted to capture from them the beauty and the ethnicity of their country. ठीक है, ये तो स्कॉटलैंड के साथ इन्होंने किया. ब्रिटिशर्स वेरी श्रूड एंड वेरी स्मार्ट पीपल. क्योंकि इंडिया में जो उन्होंने किया, सो व्हेन यू स्टडी द इंडियन हिस्ट्री फर्दर ना, सो यू अंडरस्टैंड that how the economic repression was there, how the cultural repression of the Indians had happened. Same thing they were trying to do with their neighbors. अभी हम तो यूरोप की बात कर रहे हैं. Right now we are not talking about the colonies. Right now we are not talking about the Asian countries. We are talking about the British countries. We are talking about the European countries. Scotland को उन्होंने कब्जा कर लिया. Now they had an eye on Ireland. 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन करके स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया. एंड आयरलैंड में उन्होंने क्या किया? इट वॉज बिकॉज आयरलैंड में दे अप्लाइड देयर प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड रूल. आयरलैंड फेस्ड सेम प्रॉब्लम. इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम जो है ना, वो आयरलैंड में भी हुआ. आयरलैंड में ना एक्चुअली इट वाज अ वॉर बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप्स. डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स विच आर स्टेइंग इन आयरलैंड, उसको उन्होंने लड़वा दिया. इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन Catholics and Protestants. Please try to understand between Catholics and Protestants. These are the two groups between in which the Christian communities are divided. Now what happened? English people, they helped the Protestants of Ireland. Britishers ने क्या किया ना, आयरलैंड में जाके एंड उनको कहा, प्रोटेस्टेंट्स को कहा कि व्हाई डोंट यू एस्टैब्लिश योर डोमिनेशन ओवर द कैथोलिक कंट्री. दे हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड एंड दे सेड कि एस्टैब्लिश योरसेल्फ ओवर दिस कैथोलिक कंट्री. ओके, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? तो भाई दो ग्रुप्स हैं, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट्स. सो British supported Protestants. Protestants को जाके इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया. And they said to establish yourself. Why are you tolerating the dominance of the Catholics? Okay? The British helped the Protestants. Catholic revolted against this British dominance. कैथोलिक जब भी रिवोल्ट करते थे तो उनको हमेशा सप्रेस कर दिया जाता था. कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, उनको समझ में आ रहा था ब्रिटिशर्स की चाल. दे अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ अ गेम द ब्रिटिशर्स आर प्लेइंग. सो द कैथोलिक्स प्रोटेस्टेड, बट ब्रिटिशर्स की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी. दे वेयर सप्रेस्ड ऑल द टाइम. हमेशा जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते थे उनको दबा दिया जाता था. आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट, काफी दिन तक ये रिवोल्ट चलता रहा. एंड दिस रिवोल्ट वॉज लेड बाय वुल्फ टोन. Wolfe Tone was there and his United Irishmen were there. Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801. देख रहे हो किस तरह से आसपास के एरियाज में ब्रिटेन ने कब्जा किया. How did British capture the nearby areas? Can you see how smartly? And after revolt was there, Wolfe Tone and his United Irishmen, ठीक है, they revolted but they failed. इसमें Wolfe Tone का नाम देना है. Wolfe Tone and Irishman revolt failed. इन्होंने जो रिवोल्ट किया वो फेल हो गया. एंड एज अ रिजल्ट
a new British nation was formed with British culture. ठीक है, British nation was formed, पूरा आसपास को उन्होंने दबा दिया. Was formed, please remember the year, it was in 1801. Ireland was incorporated into United Kingdom. Got it? And symbols, जितना कुछ भी ब्रिटेन में था, whatever was there in Britain, it was all forced on Ireland. Ireland के लोगों को कहा गया कि अब जो कुछ भी ब्रिटिश में हो रहा है, like the British flag, the national anthem, the English language, all these things were actively promoted, and older nations survived only some few cultures and customs and traditions. This is what was the strange case of Britain. बहुत smartly इन्होंने क्या किया, nearby areas were incorporated in Britain and captured, and the British culture was imposed on them. Smartly, smart people, जहां जाते हैं छा जाते हैं. ठीक है, मैप में दिखाना चाहती हूँ. I just want to show this to you in the map. Got it? चलो, let's see. Students, just now we have discussed about the strange case of Britain. We talked about the division of Britain was already there. Nationalism had happened, and it turned out to be one of the biggest nation states in Europe. We have already talked about the unification of Germany. Okay, you can see here, we can see the state of Italy, and this is Prussia, Austria, Hungary. ये सारे को मिला के जर्मनी बना. Got it? Now we are talking about the strange case of Britain. ये वहां पे ये मैप नहीं दिया हुआ है. This map is not given with the topic that we have discussed just now. Got it? This map is in this topic, page number 6. ये आप देख लो, यहाँ पे इस मैप को आप सर्च करना, where I wanted to show you कि how Britain has been very smartly has captured the major places in and around it. ये आप देख रहे हो, आयरलैंड. ठीक है, ये these were all these separate states. पहले the ethnic groups that resided here, they were known separately. They were not known unitedly. इनको एक में नहीं काउंट किया जाता था, इनको अलग अलग काउंट किया जाता था. Now please remember the Act of Union that was signed in 1707 between Scotland and Great Britain. As I had already told you, Scotland is a beautiful place. The landscape that is there, the landscape is very attractive, and Britishers always wanted to capture that. Britishers हमेशा beauty को बहुत appreciate करते हैं, and they wanted to capture Scotland. For that purpose, पहले तो एक बहुत ही अच्छा सा treaty they had signed, which was called as the Act of Union, and Scotland को उन्होंने कहा कि now we are becoming powerful. British, only British. Great Britain तो ये बाद में बना ना, later on. And Scotland को अपने में मिला के they started dictating their terms and conditions on Scotland. They told the Scottish people that you are not allowed to speak the Gaelic language. The first thing that you attack is the culture. कल्चर को अगर आप ख़त्म करते हैं तो आधी जीत तो वहीं पे हो जाती है. एंड स्कॉटिश पीपल दे वेर वेरी डिस्टर्ब फॉर दैट. बड़ा धक्का लगा उनको. दे हैड लॉट ऑफ फेथ दैट विथ दिस एक्ट ऑफ यूनियन दे विल बी नोन एज द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ब्रिटेन, वेयर स्कॉटिश पीपल विल बी ऑल्सो गिवन ड्यू रिस्पेक्ट. ये तो हुआ नहीं. The other thing that they had done, that they had made a treaty with Ireland also.
आयरलैंड में देयर वेयर डिफरेंट ग्रुप्स विच एग्जिस्टेड, the Catholics and Protestants, majorly the religious groups I am talking about. इन religious groups को भी इन्होंने separate कर दिया and the Protestants were dominating and बाकी के लोगों को इन्होंने they have finished. Got it? तो Protestants, Catholics were put down, though some of the revolts were there, but all these revolts were very nicely and very smartly suppressed. इसको इन्होंने suppress कर दिया and ultimately they were called as Great Britain. This is all the story. Map वहाँ पे नहीं दिया हुआ है, so I had just shown it to you in this European map, and now it is known as the Great Britain. Got it? So this was the story, children. Please go through it. Next class mein we will be doing the last topic. Thank you so much, children, and all the best to you.